अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल वबअसना मिनहुमुस्नई अशर नक़ीबा वक़ालल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतैतुमुज़्ज़काता व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रदतुमुल्लाहु क़र्दन हसनन लउकफ़्फ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम वलउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार फमन कफ़र बअद ज़ालिक मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। फ़बिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियah युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिह वला तज़ालू तत्तलिउ अला ख़ाइनतिम मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिह फ़अग़रयना बैनहुमुल अदावत वल बग़दाअ इला यौमिल क़ियामह वसौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और बेशक अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया और हमने उनमें 12 सरदार कायम किए। और अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ज़रूर अगर तुम नमाज कायम रखो और ज़कात दो और मेरे रसूलों पर ईमान लाओ और उनकी ताज़ीम करो और अल्लाह को कर्ज़ हसन दो, बेशक मैं तुम्हारे गुनाह उतार दूँगा और ज़रूर तुम्हें बागों में ले जाऊँगा जिनके नीचे नहरें रवां। फिर इसके बाद जो तुम में से कुफ्र करे वो ज़रूर सीधी राह से बहका। तो उनकी कैसी बदअहदियों पर हमने उन्हें लानत की और उनके दिल सख्त कर दिए।
اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں اور بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں، اور تم ہمیشہ ان کے ایک نہ ایک دغا یعنی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے، سوا تھوڑوں کے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزرو۔ بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہیں، اور وہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا تو وہ بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں، تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت کے دن تک بیر یعنی دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 14 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔